नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी कॉमन टॉपिक और बहुत ही कॉमन बात, रीजंस फॉर इम्प्लांटेशन फेलियर। यस, when we start the journey or when we go for embryo transfer, so it was like कि ये तो सक्सेस होना चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर फेल नहीं हो सकता। And like after 15 days wait, we just thought कि oh god ये पॉजिटिव आ जाए, and in case गलती से भी वो नेगेटिव आ जाता है, then we just try to figure it out कि क्या मैंने गलत किया, क्या मेरे डॉक्टर ने बताया जो मैं फॉलो नहीं कर पाई, और what could be the various reasons for implantation failure। बट अगेन हमें कभी समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं। डायग्नोसिस सब ठीक थे, मेडिसिन आपने टाइम पे खाई, आपने सारे स्कैन्स किए, आपने द सो कॉल्ड 15 डेज का रेस्ट भी लिया, स्ट्रेस नहीं लिया, ऑफिस नहीं गए, कुछ इधर उधर हेवी वेट नहीं उठाया, कुछ भी गलत नहीं किया, ट्रैवल नहीं किया, फिर क्या हुआ? आज हमने सोचा कि इसी बारे में बात करते हैं, बिकॉज व्हेन वी डिस्कस अबाउट आईवीएफ तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आईवीएफ फर्स्ट ट्रांसफ़र में सक्सेस क्यों नहीं होता, और अगर नहीं होता तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। सो वी हैव आवर गेस्ट डॉक्टर स्वाति मिश्रा फ्रॉम पटना विद अस, and let me just call her on the main screen and let's start with the session। तब तो आप लोग अपने सारे क्वेरीज, क्वेश्चन, सवाल, डाउट हमें भेजना शुरू कीजिए। एंड फॉर दिस इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस सेशन यूएनएस इज आवर नॉलेज पार्टनर। सो व्यूअर्स, आप अपने सवाल भेजिए, हम डॉक्टर को इनवाइट करेंगे। नमस्कार डॉक्टर, गुड इवनिंग। Good evening Purnima, and good evening everyone. I am Dr. Swati Mishra from Next IVF Patna. So viewers, we have Dr. Swati Mishra with us. She is an IVF consultant and IVF fertility specialist from Next IVF and Fertility Center, Patna. She is a hysteroscopy, laparoscopy surgeon also. She has done many cases and obviously brought smile to many faces also. So Doctor, Thank you, Purnima. Pleasures are Doctor. सो आज का टॉपिक बहुत, हम अगर कहें तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर हम इसका रीज़न ढूंढने जाते हैं तो हमें कभी नज़र नहीं आता। सो द टॉपिक इज रीजंस फॉर इम्प्लांटेशन फेलियर। एंड जब भी एक आईवीएफ या ट्रांसफर फेल होता है तो एक पेशेंट को जितना बुरा लगता है उतना ही एक डॉक्टर को लगता है, क्योंकि डॉक्टर ने भी पूरी मेहनत की है पेशेंट के साथ। सो डॉक्टर, हाउ यू स्टार्ट आफ्टर the failure, like diagnosis है, suggestion है, क्या है? First Purnima, I would like to tell you the causes for implantation failure. हम शुरू से बातें करेंगे। सबसे पहले तो most important factor is the age of the patient. अगर age of the patient is more than 35 or you can say 40 or 45, then the chances of implantation failure or IVF failure is always there. So it is not a modifiable thing. If patient comes to you at the age of 40 or 45, you have to treat the patient, rule out various factors, but it is not modifiable, है ना? आप उसको change नहीं कर सकते, you can't modify the things, बिल्कुल। तो इसलिए age is the most important factor, and I always suggest my patients, please आप जब भी conceive करना चाहते हैं, try at early as possible, because late marriages बहुत बढ़ रहे हैं, and in rural area people 10 से 15 साल वो देखते हैं, let us try some other methods, कुछ आयुर्वेदिक they'll try, they will go to quacks, or even if they know the reason, so why in a hurry, और उनके लिए ये costly affair भी लगता for them। And in urban area the late marriages is the main cause, because आपके ovum की quality and quantity deteriorate करने लगती है। It's a natural phenomena in every female reproductive age group, है ना? तो जब भी हम बात करेंगे तो आप जब भी कंसीव करने, बी एट अ प्रॉपर एज। सबसे पहले आप एज अपना ध्यान रखें। अगर लेट मैरिजेस है, कम टू योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, रूल आउट द कॉजेज एंड गेट ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई कॉज नहीं नजर आ रहा है
then you can wait for 1 or 2 years, 3 years. अगर causes दिख रहे हैं आपको that your AMH is low or ovarian reserve is low or there is tubal factor, male infertility factor, then get treatment as soon as possible because age is such a thing that we can't modify. हम उसको treat नहीं कर सकते and it is associated with many most important reason for failure. पहला तो मैं एज बताऊंगी, फिर सेकेंड है कि आप जब आते हैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास तो हम डिफरेंट फैक्टर्स को रूल आउट करेंगे. फर्स्ट इज योर ओवरी. देयर आर 3 important reproductive organ which we have to see in female. First is the ovary, then the tubes and the uterus. And if your ovarian reserve is poor, the quality and quantity of the oocyte is poor, then take treatment as soon as possible. हमारे पास जितना है एक उसी में काम करना है. Then your quantity is poor, then the blast or embryos that will be formed will be less in number. और if there is less in number, तो आप इम्प्लांट भी एक बार या 2 बार ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट. अगर आपके 2 ब्लास्ट बनते, एटलीस्ट यू विल ट्रांसफर इन 1 or 2 सेशंस, नॉट मोर देन दैट. तो उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर डिपेंड करता है. फिर इफ यू गेट अ ट्यूबल फैक्टर, अगर कोई ट्यूबल फैक्टर है तो यू गेट योर ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. आप IVF ट्रीटमेंट के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल जाएं. डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम. अच्छा अभी तो शादी के 2 ही साल हुए हैं, लेट मी सी, हो सकता है ट्यूब खुल जाए, कोई मेडिसिन दे दो आप डॉक्टर. दीज आर द थिंग्स व्हिच पेशेंट आस्क फ्रॉम अस, है ना. तो वो नहीं करना है आपको. इफ देयर इज अ कॉज, जस्ट गो फॉर द ट्रीटमेंट. Then certain uterine factors which can lead to implantation failure. Suppose the uterus is biconvex, that is malformation is there, or there is a septum. It can be complete or incomplete. Then treatment is needed that you go for a resection. There can be submucosal myoma or polyp. Go for polypectomy or mammectomy hysteroscopically. Then if the cervix is not negotiating properly or if there is infection, then you treat the cervicitis or vaginitis. ये सारी चीज़ों को रूल आउट करना है. अब आपका आता है कि आपके नंबर ऑफ एम्ब्रायोज कितने बन रहे हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है जब आप स्टिमुलेट करते हैं. तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है और यू डोंट हैव मेल फैक्टर एसोसिएटेड, तो आपके ब्लास्ट अच्छे बनेंगे. देन दैट chances of implantation failure is less. अब मैं आपके आऊंगी ओवरीज के फैक्टर्स आपने रूल आउट कर लिए. इफ देयर इज PCOD और endometriosis, these are the main tubal factors, ovarian factors, that is associated with poor ovarian reserve. अगर आपके बड़े एंडोमेट्रियोमास हैं या चॉक्लेसिस रेगुलरली फॉर्म हो रहा है, इवन यू ट्रीट विथ लैप्रोस्कोपिकली, आप रिमूव कर देते हैं, मे रिकर. तो जब आप लैप्रोस्कोपिकली आप उसको रिमूव करते हैं, देन गो फॉर ट्रीटमेंट एंड यू कैन स्टार्ट द स्टिमुलेशन एज सून एज पॉसिबल. डोंट डिले इट. तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन फेलियर. अब मैं आपको आऊंगी ग्रेड्स ऑफ एम्ब्रायोज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपके PCOD सपोज होते हैं, नंबर्स तो हो सकता है निकल आए पर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं होते. द ग्रेड क्वालिटी ऑफ oocyte is not good, and after fertilization also the blastocyst grading is not good. That is also one of the important factors for implantation failure. Then blast आपके अच्छे बन गए, uterine factor भी अगर अच्छी है, then you have to treat certain, अगर कोई pathological factor associated है female के साथ, if she has diabetes or hypertension or certain autoimmune diseases, or she has severe vaginitis or cervicitis, you just treat it. You just treat it before starting the treatment, your IVF cycle. So I'll suggest ये सब वर्कअप करने के बाद you start the treatment. अगर फैक्टर्स निकल रहे हैं, पहले प्रॉपर काउंसलिंग टू द पेशेंट, है ना, ताकि वो समझ सके हमारे फैक्टर्स क्या हैं और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. बिकॉज विथ एज एवरीथिंग विल डिटोरिएट, द फैक्टर्स विल डिटोरिएट. अब मैं आती हूँ कि अगर कोई का रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, इफ एवरीथिंग इज गुड, योर यूट्रस इज गुड, योर ट्यूब्स आर गुड, योर ब्लास्ट्स आर वेल फॉर्म्ड, तो आप अपने अगर इम्प्लांटेशन, यू चेक योर लैब कंडीशंस.
आपका कल्चर मीडिया चेक करो, यू चेक द gases, you check the protocols, है ना, वो सब चेक करके then you see whether these are not the factors for bad blastocyst formation, not good blast formation. अब नाउ आई से मान लीजिए आपने ईटी अच्छा किया, डिफिकल्ट ईटी के बाद भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस होते हैं। अगर एंडोमेट्राइटिस है तो इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। नाउ आफ्टर ईटी ट्रांसफर पेशेंट कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यू सजेस्ट अ गुड डाइटरी हैबिट्स, take proper rest, not complete bed rest. I never suggest a complete bed rest, but you take rest, proper rest, है ना? Don't exert yourself, don't do your heavy work. You can do your normal day-to-day activities, don't do a heavy work. Now dietary habits should be changed. Take a good healthy food, है ना? If patient is consuming any tobacco or alcohol, these should be strictly avoided. Some are in a habit of taking excess of tea or coffee in the office. Habit हो जाती है लोगों के, बैठे हैं तो कॉफी लाया, वो सब curtail करना है। So these are the things which we have to take in consideration. और इन सब के बाद अगर आपका implantation failure हो रहा है, then check your lists. Check your list, check your protocols, check your lab, take some extra measures. जैसे अगर if your ovarian reserve is poor, you can change your protocols. अगर पहले वाले में अच्छे number of oocytes आपके नहीं निकल पाए, you try to change your protocols. You can increase the dose, you can change the drugs. और अगर मान लो अपनी oocytes की क्वालिटी अच्छी नहीं बनी, you check your lab first. अगर grading भी अच्छी है, you have done your uterine factors, you have ruled out, तो फिर आप पेशेंट का कंप्लायंस पे आप उसको ध्यान दे सकते हैं। और सर्टन आप कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, हमारे इंडियन सिनारियो में कुछ पेशेंट के साथ कुछ डेफिशिएंसी होती है, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन प्रॉब्लम होता है, इस सब पे प्रॉपर वर्क करना होगा। नेक्स्ट साइकिल में अगर आपने पहला फेलियर हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो यू चेक योर थिंग्स राइट फ्रॉम फर्स्ट। अगर ग्रेड्स खराब है, यू वर्क ऑन ग्रेड्स ऑफ एम्ब्रायोस। अगर यूट्राइन फैक्टर खराब है, सपोज एंडोमेट्राइटिस रहा जो आपने रूल आउट नहीं किया, अगर थोड़ा थिन एंडोमेट्रियम है, द वैस्कुलरिटी इज नॉट गुड, यू कैन गो फॉर पीआरपी। अगर नहीं तो आपको एरा टेस्ट कराओ। यू हैव टू रूल आउट दीज थिंग्स, यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा टेस्ट्स। और पेशेंट कंप्लायंस फिर आप देख the guides which you have given to them, they are following it properly, which में और stress free उनको करो। stress second cycle या third cycle जब भी होता है, patient are always in a stress. So my opinion is, first अगर implantation failure हो रहे हैं आपके, first rule out the cause, then work on it before going just jump कि next cycle में फिर transfer करना है। हाँ, आप you take time, work on everything, सारे हार्मोनल टेस्ट करो, वेदर कोई पैथोलॉजी तो नहीं। बीच में कभी कभी पेशेंट आपने ट्रांसफर कर दिया, शी कॉट अ फीवर, हाई ग्रेड फीवर आने लगा है, वो सब सारे इन्फेक्शंस आप सारे टेस्ट रूल आउट कर लो। सपोज शी डेवलप हाई ग्रेड ऑफ फीवर ड्यू टू यूटीआई, सिंपल थिंग्स, इट कैन बी अ रीजन, इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट कैन बी अ रीजन। वो सब पे हमें चेक करना। इवन पेशेंट कंप्लेन कुछ भी करता हो, just don't ignore it, try to treat it. And Dr. Swati, this is like very common nowadays. We have these queries related to UTI, as you mentioned कि embryo transfer के बाद UTI होना common है, fever है, infection है, so उस केस में हमें embryo transfer से पहले क्या precautions लेनी है? Anything specific? Usually we do a routine test, है ना, we do routine examination of urine and culture. I usually send. अगर हमें finding लगती है TVS, तो this is a simple test, go for it, है ना। routine urine और culture करा लो, एक CPC करा लो, है ना। शुगर तो सब कराते हैं before going for IVF। ये सब छोटी छोटी चीजें जिस पे ध्यान देना है। और पेशेंट जब भी कंप्लेन करे, don't ignore it.
अगर वो कंप्लेन कर रही है कि there is burning micturition, increased frequency of micturition, तो you treat the patient accordingly. There is no harm in giving antibiotics which are safe even after implantation, which are Right. safe, you can give it. So basically, whenever Usually, UTI is common because patient of bed rest. मतलब even if you don't suggest bed rest, they will do bed rest. I right. tell them to do your normal activities, don't do bed rest. लेकिन patient usually do bed rest. They hold the urine for a longer time, and they don't proper hydration नहीं है. These are the reasons for UTI. UTI, right. एंड आई थिंक जैसे आपने बोला कि बेड रेस्ट में हर कोई इंटरेस्ट रखता है, एंड दिस इज अ फैक्ट. पीपल एक्चुअली आस्क के वो 15 डेज तो हमको कुछ नहीं करना है. नॉट इवन 15 डेज. आप जब साइकिल स्टिमुलेट करने जाते हो, जब आप बोलते हो कि आई विल गो फॉर IVF योर स्टिमुलेशन, तब से वो सोचते हैं कि अब तो मुझे बेड रेस्ट करना होगा, एंड थ्रू आउट 9 months मुझे तो बेड रेस्ट करना. These are the certain myths which we have to counsel and make patients stress free. Stress free karna, because it's a normal phenomenon like other pregnancy you have to carry. There are certain precautions, certain extra drugs which you give. Right. So doctor, as you mentioned about this myths, so एक बहुत common myth है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है. So what you say about it? No. This is it because that will lead to infection. And if you don't wash your hair, then that may cause that will cause dirt, and that may cause infection, normal infection, head infection, fungal infection, bacterial infection, even in hair. So you have to routinely, what you do, shampoo your hair for after 2 or 3 days. You do it. Take proper bath. I always suggest. Maintain your vaginal hygiene. Right. This is really important because सबसे कॉमन चीज है ये कि हमें लगता है बस एक जगह बैठे रहना ही शायद इट्स द सक्सेस मंत्रा फॉर दिस IVF. So it's not that. And Dr. Swati just mentioned, do your routine work. But obviously आपको हमें सबको पता है कि heavy work क्या है, mild work क्या है और routine work क्या है. तो हेवी वर्क अवॉइड करना है, एक्सर्शन अवॉइड करना, ट्रैवल अवॉइड करना है, एंड फॉलो योर रूटीन, डेली रूटीन, मेंटेन हाइजीन, टेक प्रॉपर डाइट, एंड बी stress free, I mean to say. Yeah. So doctor, we'll take one query over here. 6 weeks pregnant, then miscarried, periods came. Why this happened? How to know whether it is implantation failure? I have 6.35 AMH. 6.35 AMH, that means her AMH is good, more towards PCOD. More than 5, their number of follicles were good. And PCOD is a cause for miscarriage, one of the reasons for miscarriage. Maybe blast that was formed was not of a good quality. And PCOD is sometimes associated with thin endometrium. The vascularity is poor. So that can be a reason for miscarriage, even if she gets pregnancy. In normal, if a PCOD patient conceives normally, many a times PCOD patient conceives normally, natural cycle, then also miscarriage rate is higher than the other patients. And in this case, it can be the reason. Right. So doctor, आपने अभी mention किया कि vascularity. So what exactly is this and how we can check this? When we do before embryo transfer, we do a sonograph, a TVS, and see the triple layer of the endometrium. That should be between 8 to 10 mm. That is, it should be between 10 mm and proper triple layer lining with good vascularity. When you do a Doppler, you'll see the vessels are good. If it's not there, then there are chances of implantation failure. In PCOD patient, I've seen that there is thin endometrium most of the time, and it's difficult to prepare their endometrium. So it can be the reason for implantation failure. We have to work on it, give some extra medicines, and sometimes we have to do PRP.
Right. You may go for error test. Error This test. can, Right. and even blasts are not a very good quality in PCOS. Quantity is good, but quality wise, it's so if there is 2 or 3 failures, you can go for PTTA, or aneuploidies can be the reason in this failure. एंड आई थिंक आज के टाइम में हमारे पास इतना एडवांसमेंट है, न्यू प्रोसेस, प्रोसीजर्स, टेक्नोलॉजी इतना है कि अगर हम थोड़ा सा भी खोदना शुरू करें तो रीजन कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, and we have to work on it. एंड आई थिंक डॉक्टर स्वाति द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि एक फेलियर के बाद हमें ऐसे लगता है कि बस नेक्स्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए, फिर वी जस्ट जंप टू द नेक्स्ट ट्रांसफर. हाँ, that I tell you earlier also, just don't jump कि अब इस बार तो everything was good. Next time जब cycle आए, I have to prepare the endometrium for transfer. Sorry. तो first see the causes. Try to rule out. हो सकता है कुछ miss हुआ, maybe. Right. So first, the patient comes to you with a negative result. Take a month gap. Make her stress free. Rule out the causes, then do a second transfer. I think this is most important thing that, as Dr. Swati mentioned, take a gap. आपके embryos already frozen हैं. Because patient भी stress, बहुत ज़्यादा stress उस समय रहता है उनको. उस समय stress. तो try to calm them first, है ना. Stress free रहें. Then work out the reasons for implantation failure. Then don't be in a hurry. Right. And in case you think that yes, you really need someone to vent out, you really need a good counseling session with an expert, then please do let us know. We have interesting counseling sessions, therapies for you to make you your IVF success. So Dr. That's here, very good. Yeah, we do have That's counseling. सो डॉक्टर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ये हमने बहुत कॉमनली सुना है, देखा है. आजकल डॉक्टर्स इकोस्प्रिन टैबलेट्स देते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस. मैम, मुझे हर ट्रांसफर के पहले इकोस्प्रिन टैबलेट्स देते हैं. प्लीज कैन यू टेल मी द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ दिस इन इम्प्लांटेशन प्रोसेस? Because it is a blood thinner. It is a blood thinner. Platelet aggregation को कम करता है इकोस्प्रिन. Okay. तो आपकी वैस्कुलरिटी यूट्रस की अच्छी होगी. तो we give prophylactic इकोस्प्रिन to every patient. Okay. In IVF, even in normal pregnancy also, इकोस्प्रिन is advised. So you need not to worry कि हमारा कुछ प्रॉब्लम है. That's why I'm. People इकोस्प्रिन को बहुत वो लेते हैं कि why I'm getting this drug. राइट. एंड लोगों का मानना है कि एक बार हमने कुछ स्प्रिंट शुरू कर दिया तो ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. No, it's not. नहीं. So this is also a one myth. So please do consult your doctor कि ऐसा नहीं है. We stop icosprin at 34 weeks. 34 weeks placed, and there are certain hazards to the baby, and after 34 weeks. There are chances of patent ductus arteriosus if you don't stop. So every gynecologist stop at the age of 34. And doctor, we have next question related to ectopic pregnancy. So after ectopic pregnancy, for how many months we can try for conception again? If you are going for a laparoscopy surgery in ectopic pregnancy, after healing you can take a gap of 6 months or 1 year and then go for normal conception. Your one tube may be patent most of the time. Okay. Normal pregnancy can take place. If it's not, after 2 or 3 years also, if the patient is not able to conceive, then certain therapies can be given, like IUI you can provide. Then also it's not working, then go for IVF. And doctor, in case IVF में ectopic pregnancy हो, then after how many months gap one can go for next embryo transfer? Like same. Okay. Take gap of 6 months or 1 year.
because healing process is there. You have your cut in the abdomen, the patient will take rest, and then you can go for transfer after 6 months. Because uterus पे तो कोई cut है नहीं, you can transfer. So doctor, I have one more query with me. So this is an anonymous query from our member. Why I am getting mid-cycle spotting from day 10 to day 16 or 17 from the last 6 months, and it started after my IVF treatment. So now it is getting difficult to transfer the embryo. So the lady is endometriotic patient, stage 3 with adenomyotic uterus, trying to conceive for the last 7 years. 1 laparoscopy done, and after that 2 failed IUI and 1 failed embryo transfer. 2 hysteroscopy, where in last hysteroscopy polyp removal done. Now doctor, Yes, polyp can be the reason for spotting in between. Does she get bleeding after polypectomy? उसके बाद उसको bleeding हो रही है? In case you are in the session, or you can just message me, WhatsApp me कि polyp removal के बाद आपको spotting फिर से हो रही है कि नहीं. So we'll just wait for her. Polyp is one of the main reason for intermenstrual bleeding. And doctor, now she is saying that her doctor is again saying to do laparoscopy for tube removal, and other doctor saying no need of laparoscopy. So she started Primulate tablet for 2 months. My laparoscopy was done on 13th July 2021. Okay. If there is hydrosalpinx, or if the endometrioma is increasing in size, so it's better to remove the endometrioma, do a salpingectomy or clipping of the tubes, because hydrosalpinx, the fluid inside the tube, is toxic to the embryos if you transfer. So better do a clipping or salpingectomy than go for next transfer, because there are failure in this case. Right. So it can be the reason, and it's better to do a relapse again. Okay. According to me. If hydrosalpinx and endometrioma is present. Okay, for both cases. Both cases. But डॉक्टर कई बार ऐसे लगता है ना, एक लेप्रोस्कोपी हो गई, then again फिर it's tedious for the doctor also and the patient also. Doctors also don't want to do surgery again and again. But implantation failure is there, then better to avoid second implantation failure, do a laparoscopy surgery. Right. So if your doctor is suggesting anything, just as Dr. Swati mentioned, you can again go for clipping of the tubes. Maybe it helps as you have your embryos frozen. Just make sure of each and everything. आप हर process, हर procedure कीजिए ताकि आपका next transfer. There is no procedure is 100% in IVF. Even if you go for salpingectomy, you remove her endometrioma, if it's there, we don't guarantee. But if you're seeing the pathology, remove it. I think IVF का यही सबसे बड़ा एक mystery है. There are certain things which are still in experimental phase, you can say. Right. हम कभी भी किसी को एश्योरेंस गारंटी नहीं दे सकते, बट यस वी कैन. But this is the only hope. Right. And it's always better to go for diagnosis first, then go for treatment, and then go for your transfer. Best option is this. So doctor, we have another query. My age is 27 and husband's age is 28. My AMH is 10 and a period cycle is 34 days. Also, my husband count is 20 to 25 millions. Please suggest what should I do? First, see her, and I'll see her antral follicle count first. If AMH is 10, most probably she is a PCOD patient. Her husband count is just to the margin, 20 million.
what is the morphology, what is the motility. These certain things has to be ruled out. If first I'll try to give ovulation induction to them, and then go for IUI. If there is failure, 2 to 3 cycle of ovulation induction, do a follicular monitoring, and if there is a failure, then I'll try for IUI, then jump to IVF. Yes, tubal factor, uterine factor should be. There are no other pathology. I think I lost it. Am I clear? My voice? Yeah, Purnima, you're clear. Okay. So yes, जैसे डॉक्टर स्वाति ने बताया, प्लीज प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए एंड डोंट रश द ट्रीटमेंट. यू आर एट द गुड एज और आपकी एज आपको हेल्प जरूर करेगी. डॉक्टर, व्हेन वी आर इन दिस IVF ट्रीटमेंट, तो हमारे पास बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के, जहाँ पे एक बार हार्ट बीट आ गई लेकिन फिर नेक्स्ट स्कैन में चली गई. सो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? There are certain things which is not in our hand, and it is one of them. Cardiac activity आ गई और चली गई. So there are certain pathological condition associated with the female. Suppose she is diabetic. Suppose she has hypothyroidism. Her age is above 35 or 40 or 45. This can be the reason for IUD, or you can say missed abortion. Missed abortion, right. Missed abortion. It can. Or if the quality of the blast was not good. Endometrium is not receptive because vascularity is not good. The vessels are not going to the fetus, and it can lead to IUD. Missed abortion. So basically reasons could be many. Hormonal, age of the patient, uterine factor, vascularity, everything is associated with them. If there is a high-grade fever, if patient catches a high-grade fever, there is infection. The microenvironment in and around uterus is also very important. So doctor, we have few queries related to this कि कुछ सिम्टम हैं जो हमारी बॉडी शो करेगी कि यस implantation failure है, like any discharge, any discomfort, any pain, anything. If the patient is positive, अगर उनकी pregnancy test implantation failure नहीं हो रहा है, then the symptoms will arise. More symptoms will arise. She may get nausea, vomiting, certain cramps, mid-cycle spotting. But if there is implantation failure, the symptoms will be less. Right. So positive का जल्दी पता चलेगा. Positive का जल्दी पता चलेगा. Right. अच्छा डॉक्टर, you just mentioned about endometrium thickness. आपने बोला 8 mm से 10 mm के बीच. अगर मान लीजिए 14 mm thickness है किसी की and she is going for IUI, so ये thickness chances of failure is there because withdrawal bleeding हो जाती है. इतना thick before implantation there is withdrawal. So implantation is not proper. Maximum 10 to 11. If 11 it's good, but 14 or 15 is associated with implantation failure. Natural cycle also and IVF also. अगर thickness हमें ज़्यादा भी दिखते हैं, if the endometrium is more than 14 or 15, I cancel that. Okay. So I think जिसने आपने पूछा था कि आपका एंडोमेट्रियम थिकनेस 14 mm है एंड IUI पे आप गए हैं, तो एज डॉक्टर सजेस्टेड आपका एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा थिकन्ड है. रिसेप्टिव नहीं है, रिसेप्टिव, इट्स नॉट वेरी रिसेप्टिव. इट शुड बी ऑप्टिमल एंड देयर चांसेस ऑफ विथड्रॉल बिफोर इम्प्लांटेशन. तो ज्यादा भी नहीं हमको चाहिए और कम भी नहीं चाहिए. Everything should be optimal. Okay. So doctor, one more query we have.
Age 32, stage 4 endometriosis, first cycle ectopic pregnancy, second cycle failed, ERA test done in third cycle, then also it failed. What changes need to be done in next cycle? Endometriosis stage 4 itself is one of the main cause of implantation failure, because certain enzymes, interleukins, and certain things are secreted, which you can say the causes of implantation failure. ERA is not a guarantee of 100% guarantee. If ERA test is positive and you transfer on that day in which ERA Right. was good, then also 60 to 70%, if ERA test is good or positive, then there are chances of implantation, but it's not 100% guarantee even if you do ERA test. So you have to work in this. I will say remove the endometriomas, give her a suppression with GnRH agonist, prepare the endometrium properly, if possible do salpingectomy, remove endometrioma, then you plan your second cycle. Okay. Next cycle. Right. So doctor, जैसे अभी ERA test, many doctors are suggesting, and even I think this is a good test also, because बहुत लोगों को help मिली इससे. So इसका एक Or time endometriosis is sometimes associated with adenomyosis. Right. This adenomyosis is a cause for the uptake or implantation is not good in adenomatic tumors. Okay. Always do a hysteroscopy, laparoscopy. और अगर किसी ने एक बार ERA टेस्ट करवाया तो उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, वो कितने साल तक वैलिड रहते हैं? ये वैलिड रहते हैं, There are no certain things कि आपने इस ईयर के बाद you again have to go for ERA test. You again have to go for ERA test. ऐसा कुछ अभी तक नहीं है. Right. Because this test but do it itself as soon as possible, because आपने 10 साल वेट कर लिया, your endometrium is decreasing, your ovarian reserve is decreasing, what's the use? मतलब आप इतना लंबा गैप ना करो. As soon as possible ERA test के बाद you go for your right, because as such ERA is a very expensive test and not right. guaranteed. Right. So we have this query, ma'am, 14 mm endometrium thickness से implantation success होगा या ज़्यादा है? थोड़ा ज़्यादा है. बट अगर आप IVF साइकिल के लिए जा रहे हैं, do it in the next cycle. और IUI है तो it's not under control. Okay. अगर आप IUI कर रहे हो on the day of doing IUI, you see 14 mm, so there are chances of negative result. तो आप patient की counseling करके you can go for next. Okay. Because endometrium and ovulation is not coinciding. And we have query related to high FSH value. So if FSH is high, what to do? IUI or IVF? If FSH is high, it's showing that there is a premature ovarian failure. Ovarian reserve is not good. The patient may have to go for donor eggs. That's cases. Okay. So I think अभी डॉक्टर ने बताया कि अगर आपका 14 mm है तो चांसेस हैं कि विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाए. So we still pray कि आपका सक्सेस हो, but according to डॉक्टर चांसेस हैं इस चीज के. So I think she is asking the query again and again. Okay, no issue. You can ask. हाँ, आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए. अगर आप IUI पे गए हैं, हो सकता है पॉजिटिव आए, बट हो सकता है पॉजिटिव, इट्स नॉट 100%. Be stress free and hope for the best. So doctor, periods में irregularity is really common nowadays. We can associate that with PCOD also.
So there is a lot of problems in my periods. In that condition, how can I have a successful implantation? In PCOD, there are certain things. There are chances of aneuploidy in the blast. The quality of the blast may be not good. The endometrium may be thin, or sometimes it's thick also. So you have to work on everything. Okay, right. The quality of the blast, which is good, then Hmm. transfer it. Prepare the endometrium properly, and then transfer. PCOD is associated with aneuploidy also. So there are chances of missed abortion is there. Even if patient gets pregnancy test positive, Hmm. there are chances of miscarriage. Okay, right. So better to treat your condition first, then go ahead with any kind of treatment. So thank you so much. Thank you, doctor. This is the way our viewers are saying thank you to you because Thank you, everyone. Thank you, everyone, and hope बिल्कुल एक everyone gets success as soon as possible who are undergoing treatment. राइट एंड व्यूअर्स अगर आप पटना में हैं या पटना के आसपास कहीं पे भी है और आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरीके का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेना है या आईवीएफ के लिए डॉक्टर ने बोला है देन ऑल्सो यू हैव फ्यू डाउट्स सो प्लीज आप डॉक्टर स्वाति के साथ कंसल्टेशन ले सकते हैं आप बात कर सकते हैं समझ सकते हैं अभी जितने भी क्वेश्चंस इस सेशन में पूछे गए हैं वी थिंक कि आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा इसके अलावा अगर कुछ भी सवाल जवाब हैं तो आप प्लीज़ यहीं पे सेशन पे पोस्ट कर दीजिए एंड वील ट्राई टू गेट द आंसर्स सो इन केस अगर किसी का कोई भी कमेंट रह गया है या कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ डू लेट अस नो सो डॉक्टर एक लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द डाइट बिकॉज everyone is having healthy diet, home cooked food. Any specific diet after embryo transfer? Take light diet. लाइट डाइट आप लो बिकॉज एसिडिटी वगैरह ना हो आपको और हेल्दी फूड लो homemade food लो and avoid excess coffee or tea. It should not be more than 1 or 2 cups. Or don't be in empty stomach. Alcohol and tobacco should never take. I'll suggest never take tobacco and alcohol and maintain a healthy lifestyle. एंड कोशिश कीजिए कि आप हमारे सेशन ज़रूर देखते रहिए बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको गूगल नहीं देगा लेकिन हम आपके लिए लेकर आएंगे एंड अगेन व्यूअर्स पटना के आसपास पटना में ही है तो डॉक्टर स्वाति से ज़रूर मिलिए आप अपने सारे सवाल सारे डाउट्स लेकर जाइए और Even वो आप queries you can या श्योर Thank you, viewers. Thank you so much for joining today. Thank you, Dr. Swati. Thank you, UNS. Thank you, everyone.